Bismillahirrahmanirrahim. I hope you're doing well. So today we are going to learn about the prepositions. Prepositions are very essential in writing and in spoken language. Without understanding and using proper prepositions, appropriate prepositions, there are so many kind of errors that occur commonly in production of writing and English language speaking. So let's find out what it is and what kind of types the preposition has. A preposition is a word or a group of words used before a noun or a pronoun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Okay, it shows the direction, time, place, location. A spatial relationship is like that the relationship between two different objects, like for example, one is table and the second is floor or sofa. Now, relationship can be of the distance, the place, the location, or of placement. For example, दो objects आपस में आमने सामने हैं, अब उनका जो relationship होगा वो distance के terms में भी हो सकता है या फिर जो door of an action हो उसके action के साथ भी. जैसे एक example है the gate jumped onto the table. अब gate है the door of an action, so jumped onto the table. तो ऑन वर्ड रिलेशनशिप बयान कर रहा है गेट एंड ऑब्जेक्ट का. सो दीज आर कॉल्ड स्पेशियल रिलेशनशिप्स. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं इन, एट, ऑन, ऑफ और टू. ओके, प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश आर हाईली इडियोमेटिक. इडियोमेटिक का मकसद ये है कि वो कॉमन नहीं है, जैसे मींस वी कैन नॉट ट्रांसलेट देम. जिस तरीके से सेंटेंसेस हैं हमारी लैंग्वेजेस के अंदर, तो पर्टिकुलरली हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते. हमें प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस को खुद पढ़ना होगा और उनकी एप्रोप्रिएटनेस को मैच नहीं बल्कि याद करना होगा. प्रीपोजिशन इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक वाहिद ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कहें कि नॉट फॉलोड बाय द रूल्स है. इनकी एप्रोप्रिएटनेस याद करने से ही पक्की होती है. ठीक है. Although there are some rules for usage, much prepositions usage is dictated by fixed expression. Fixed expression का मकसद यही है कि आपने सारे expressions के थ्रू जाना होगा, डिटेल से पढ़ना होगा. तो कोई भी ऐसा कॉमन रूल नहीं है जो हम फॉर्मूला रूल लगा के प्रीपोजिशन डिसाइड कर सकें. नो, हमें फिक्स एक्सप्रेशंस के ऊपर कमांड हासिल करनी है बाय रीडिंग देम अगेन एंड राइटिंग देम अगेन एंड अगेन. In these cases, it is best to memorize the phrase instead of the individual preposition. देखते हैं कैसे. A few rules कुछ हैं इसमें. Prepositions of direction. To refer to a direction, use preposition to, in, into, on, or onto. She drove to the store. Don't ring the doorbell. Come right in or to the house. Drive on or to the grass and park the car there. ये कुछ इसके एक्सप्रेशंस हैं और इन सारे प्रीपोजिशंस के अंदर वी फाइंड डायरेक्शन. टू, ठीक है, इन और ऑन और टू, दीज ऑल आर डायरेक्शंस. अब है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. टू रेफर टू वन पॉइंट इन टाइम एंड यूज प्रीपोजिशन इन, एट एंड ऑन. अब सेम प्रीपोजिशन टाइम के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं. So ये बात भी मैटर नहीं करती कि the same preposition means cannot be used for different types. No, a single preposition can be used in different types. Use in with parts of the day, not specific times, months, years, and seasons. He reads in the evening. The weather is cold in December. She was born in 1996. We rake leaves in the fall. Use 8 with the time of the day. Also use 8 with the noon, night and midnight. ये इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा preposition हम किस पार्ट में कैसे यूज कर सकते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं. I go to the work at 8. He eats lunch at noon. She often goes for a walk at night. They go to the bed at midnight. अब इनकी जो प्रॉपर यूजेज है, एप्रोप्रिएटनेस है, अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रीपोजिशन हम गलत तरीके से यूज करेंगे, सो दैट विल बी एन एरर. ओके, आगे चलते हैं. आई वर्क ऑन संडेज. ही डज लॉन्ड्री ऑन वेडनेसडे. यूज ऑन विद डेज. डेज के साथ ऑन यूज होगा हमेशा. ठीक है. इन मंथ्स के साथ
week के साथ और year के साथ, like that. To refer to extended time, use prepositions since, for, by, during, from, to, from, until, with, and within. I have lived in Minneapolis since 2015. I moved there in 2015 and still live there. यहाँ पे जो वर्ड सिंस है उसका मतलब है 2005 से मैं वहां पे रह रहा हूं. तो सिंस वर्ड एज अ प्रीपोजिशन जब भी हम यूज करेंगे so उसकी मीनिंग यही है, स्टिल आई एम देयर, ओके, फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट. तो यहाँ पे दिखा रहा है 2005. ही विल बी इन टोरंटो फॉर 3 weeks. टाइम ड्यूरेशन है, he will spend 3 weeks in Toronto. ठीक है. For shows duration of time. Since shows the point of time. She will finish her homework by 6. Okay. She will finish her homeworks sometime between now and 6. कि 6 बजे तक वो अपना काम पूरा कर लेंगी. He works part-time during the summer for the period of time throughout the summer. Okay. During means throughout. जैसे वर्ड है दौरान, ठीक है, समर के दौरान. I will collect data from January to June, starting in January and ending in June. तो मैं जो डेटा कलेक्ट करूंगा वो जनवरी से जून तक. Okay, they are in school from August until May, starting in August and ending in May. She will graduate within 2 years, not longer than 2 years. ठीक है. आगे चलते हैं. अब है prepositions of place. Okay. It refers to a place. Use the prepositions in the point itself. Aid the general vicinity, on the surface, or inside something contained. अब इनमें बुनियादी जो prepositions हैं, key prepositions हैं preposition of place में, वो है 8. जैसे general vicinity कोई भी हो वहां पे हम यूज करते हैं. ठीक है. vicinity का मकसद है कोई भी particular place. Like for example, somebody is asking, where are you? I'm saying I'm at home, or I'm at school, or for example I'm at college. I'm at college का मकसद ये है कि जनरल विसिनिटी मेरे लिए वो जहाँ पे मैं या तो जॉब करता हूँ या पढ़ता हूँ. ठीक है. और कोई कुछ और भी हो सकता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर विसिनिटी. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा रिप्लाई दे रहे हैं. ऑन है द सरफेस. ऑन हम यूज करते हैं सरफेस के ऊपर. एंड इनसाइड समथिंग कंटेन. ठीक है. कहीं पर भी अंदर. दे विल मीट इन द लंच रूम. शी वाज वेटिंग एट द कॉर्नर. एक जनरल विसिनिटी है. उसके अलावा दूसरा, फॉर एग्जांपल, शी इज वेटिंग देयर एट द कॉर्नर. ओके. ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द बेड. प्लेस अ पेन इनसाइड द ड्रॉवर. ठीक है. तो इसमें जो भी सारी प्रीपोजिशंस हैं उनके एग्जांपल्स हैं. आगे बढ़ते हैं. टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट हायर देन अ पॉइंट, यूज प्रीपोजिशंस ओवर एंड अबव. टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट लोअर देन अ पॉइंट, यूज प्रीपोजिशंस बिलो, बीनीथ, अंडर एंड अंडरनीथ. अब ये जो सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं इनसाइड के लिए या फिर रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, तो इन वर्ड्स में आपने प्रॉपरली डिफरेंशिएट इन सबको करना है. नहीं तो आपकी यूजेज इम्प्रॉपर हो जाएगी या फिर उसमें एरर आ सकता है. एक इसका केस हो गया एप्रोप्रिएटनेस का. दूसरा हो गया जो कनोटेशन ऑफ मीनिंग है प्रीपोजिशंस की, उनको आपने तोड़ना है, पढ़ना है डिटेल से. फिर जब आपको एक एक्सप्रेशन प्रॉपरली समझ आ जाए तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं. ओके. अब यहाँ पे ओवर एंड अबो है. टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट लोअर देन अ पॉइंट. किसी भी पॉइंट से लोअर जब होगा तो फिर ओवर एंड अबो हम कह सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट लोअर होगा किसी भी पॉइंट से, सो वी कॉल इट देन. प्रीपोजिशन बिलो, बीनीथ एंड अंडर. अब आगे इसके यूज देखते हैं. द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस. घर के ऊपर से जो है वो परिंदे उड़े. द प्लेट्स वर ऑन द शेल्फ अबव द कप्स. ठीक है. कप्स के ऊपर प्लेट्स थी शेल्फ में. बेसमेंट्स आर डग बिलो ग्राउंड. बेसमेंट्स जो हैं वो घर के नीचे या फिर ग्राउंड के नीचे खोदी गई. देयर इज हार्ड वुड बीनीथ द कारपेट. कारपेट के नीचे जो है वो सख्त, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी है. बीनीथ, नीचे. द स्क्वायरल हिड द नट्स अंडर द पाइल ऑफ लीव्स. पाइल कहते हैं कोई भी ऐसी जगह या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी कलेक्शन, पाइल ऑफ लीव्स, उसके नीचे उसने नट्स को छुपाया. स्क्वायरल होते हैं, दीज आर एनिमल्स, they live on the trees, so they store nuts for their winter vacations or winter days. The cat is hiding underneath the box. It's very simple one. तो ये इसकी जो है वो proper connotation है. To refer to an object close to the point,
use the prepositions by, near, next to, between, among and opposite. ठीक है? Okay. अब जो इसमें है refer to the object close to the point, किसी भी point से करीब वहां पे ये preposition हम use करेंगे. The gas station is by the grocery store. Grocery store के सामने gas station है. Okay. The park is near her house. The park your bike next to the garage. There is a deer between the two trees, and there is a purple flower among the weeds. The garage is opposite the house. ये preposition है किसी भी point से close जब हम कोई भी बात करेंगे या sentence लिखेंगे तो we use them there. Prepositions of location. To refer to a location, use the prepositions in an area of volume. कोई भी चीज area of volume कहते हैं, मतलब surround जो भी एक complete area है किसी भी ground का, वहां पे at a point किसी particular point पे और on the surface. They live in the country in area. Country हम village को भी कहते हैं in English. So my house is in countryside means I'm far away from the city, or I'm not in the premises of city. She will find him at the library. एक particular point है. There is lot of dirt on the window surface है. ठीक है. Prepositions of spatial relationships. Okay. To refer to a spatial relationship, use the prepositions above, across, against, ahead of, along, among, around, behind, below, beneath, beside, between, from, in front of, inside, near, over the left, off, out of, through. It's not through but through, toward, under, and within. The post office is across the street from the grocery store. We will stop at the many attractions along the way. The kids are hiding behind the tree. His shirt is off. Walk toward the garage and then turn left. Place a check mark within a box. And this was the preposition, और उसके बाद है preposition following the verbs and adjectives. चलें इसको भी कर लेते हैं. These are very useful in English error corrections. Some verbs and adjectives are followed by certain prepositions. Sometimes verbs and adjectives can be followed by different prepositions, giving the phrase different meanings. To find which preposition follow the verb or an object or an adjective, look up the verb or adjective in an online dictionary, such as Merriam-Webster. To use a corpus such as the corpus of contemporary American English, British का भी आप use कर सकते हैं. So most of the words are similar. Okay, memorizing these phrases instead of just preposition along is the most helpful. अब यहाँ पे देखें, preposition के अंदर वही उसूल दिया गया है कि आप बिना याद किए, बिना प्रैक्टिस के अंदर लाए आप preposition को इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ये रूल grammarians की तरफ से दिया गया है. So use it the way it is. Some common verb plus combinations. अब यहाँ पे about, worry, complain, and read. He worries about the future. He complained about the homework. I read about the flooding in the city. I read about the flooding in the city. अब देखें, about के साथ हम क्या use करते हैं? Worry, complain, and read. तो इन appropriate verbs के साथ आप ये preposition use कर सकते हैं. आगे चलते हैं. At के साथ कौन कौन से verbs हैं? Arrive, a building or an event, smile or look. He arrived at the airport 2 hours early. The children smiled at her. She looked at him. अब from है differ और suffer. Differ करते हैं जब हम दो चीजों को अलग करें और उनको identify करें. The results differ from my original idea. जो मैंने सोचा था उससे अलग हैं. She suffers from dementia. आगे है for use होता है account, allow and search. Be sure to account for any discrepancies. ठीक है. Account for जिम्मेदार होना. कोई भी अगर ऐसी लापरवाही या carelessness हो उसके लिए जो है वो तैयार रहना. Be sure. Okay. I return the transcripts to the interviewees to allow for revisions to be made. They are searching for missing dog. आगे है in. इनके साथ verbs हैं occur, result, and succeed. The same problem occurred in the 3 out of 4 cases. My recruitment strategies resulted in finding 10 participants. She will succeed in completing her degree. Of के साथ verbs हैं approve, consist, smell. I approve of the idea.
The recipe consists of 3 basic ingredients. The basmati smells of mildew. Okay. उसके आगे है on के साथ है concentrate, depend, insist. He is concentrating on his work. They depend on each other. I must insist on following rule. उसके बाद है to. अब इसके साथ verbs हैं belong, contribute, lead and refer. Bears belong to the family of mammals. Bears जो हैं वो mammals हैं. I hope to contribute to the previous research. Contribution ये है जो भी for example previous research है उसमें एक additional point आपने find कर दी. So this can be called the contribution. My results will lead to the future research on the topic. Perfect. Please please refer to my previous explanation. Refer है reference देना. जब भी आप कोई बात करें तो उसमें हम एक connectivity use करते हैं किसी भी बंदे को या किसी भी आदमी को कोई बात समझाने के लिए. So we use word refer, means reference. Okay, with के साथ है disagree or agree, argue and deal. I disagree or agree with you. She argued with him. They will deal with the situation. Although verb plus preposition combinations appear similar to the phrasal verbs, the verb and the the verb and the particle in the case the preposition. In these combinations cannot be separated like phrasal verbs. See more about this on this. Okay. अब एक बात समझें, जब हम phrasal verbs की बात करते हैं तो phrasal verbs के अंदर appropriate prepositions already use होती है. Phrasal verbs fixed हैं, उनके साथ जो prepositions हैं वो भी fixed हैं. तो जब भी हम phrasal verb use करेंगे तो वहां पे आप समझ जाएं कि वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उनको हम इस केस नजरिया केस के साथ नहीं देख सकते. हाँ, एक बात है जो कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक वर्ड है कैरी इन, दूसरा है कैरी आउट एंड तीसरा कैरी ऑन. कैरी ऑन टू कंटिन्यू, कैरी आउट इंप्लीमेंट है, कैरी इन की भी सेम ही मीनिंग है शायद. तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स के अंदर अगर आप प्रीपोजिशन एक चेंज करेंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी. सो डू नॉट रिलाई ऑन द फ्रेजल वर्ब्स के वी नीड टू चेंज द प्रीपोजिशन और यहाँ पे हम चले जाएंगे. ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट इट. अब देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है सम कॉमन एडजेक्टिव्स प्लस प्रीपोजिशंस. ओके. About, a, by, from, for, in, of or to. एडजेक्टिव वाले लेक्चर में मैंने एक पॉइंट आपको बताई थी कि एडजेक्टिव जो है वो इंक फॉर्म में भी बन सकते हैं और ईडी फॉर्म में भी. अब यहाँ पे वर्ड है अकस्टम्ड. ये एक एडजेक्टिव है और इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो है ट. ठीक है, अकस्टम्ड ट. ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो तभी आपके काम की है जब किसी भी वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सकें. गॉट इट? अवेयर, अवेयर एक एडजेक्टिव भी है एंड आई थिंक इट्स आल्सो वर्ब. तो बेटर है चेक देम इन द डिक्शनरी. चले अभी कर लेते हैं. इट्स एडजेक्टिव, नॉट अ वर्ब. गुड. ओके. उसके बाद है बेनिफिशियल. इसके साथ हम यूज करेंगे टू. अवेयर के साथ आएगा ऑफ. कैपेबल ऑफ. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. कंपोज्ड ऑफ. सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. कंपोज्ड के साथ ऑफ भी है, बाय भी है. दो प्रीपोजिशंस है. डिफरेंट फ्रॉम और डिसअपॉइंटेड इन और डिसअपॉइंटेड विद दोनों हैं. एम्प्लॉयड एट, एम्प्लॉयड बाय, इनकी सिचुएशन अलग हो जाएगी. एंड देन आगे वर्ड है इसेंशियल, इसेंशियल टू. ओके. अब दूसरे भी हैं कुछ. अबाउट, एट, बाय, फ्रॉम, फॉर, इन, ऑफ, टू और विद. फेमिलियर विद, फेमिलियर टू भी होता है. गुड एट, गुड फॉर, दो हैं इस पे, लेकिन इनकी मीनिंग अलग है. नॉट दे आर नॉट गिविंग द सेम मीनिंग. ग्रेटफुल फॉर, इट्स नॉट दैट ग्रेटफुल लाइक GREAT. that is GRATE means I'm thankful. Grateful for, grateful to. I'm grateful for your kindness. I'm grateful to you for your efforts you have made for me. Okay. Interested in. Happy about, happy for. I'm happy about my upcoming progress. I'm happy for you. Okay.
opposed to, proud of, opposed हो गया, proud of, responsible for, similar to, sorry, sorry के साथ है about, sorry about and then sorry for, I'm sorry about that matter. About हम वहां पे यूज करेंगे जब proper matter बताएं, और to particular गलती तस्लीम करके and then just we simply use sorry for, sorry to you, sorry for. Okay, ending a sentence with a preposition. At one time, schools taught students that a sentence should never end with preposition. This rule is associated with the Latin grammar, and while many aspects of Latin grammar have made their way into English, there are times when following the particular grammar rule creates unclear and awkward sentence structures. Since the purpose of writing is to clearly communicate your ideas, it is acceptable to end a sentence with a preposition if the alternative would create confusion or is too overly formal. Okay, the car had not been paid for ends with a preposition, and then unclear revision, paid for the car not been. एक लैटिन में रूल था कि कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रीपोजिशन पे एंड नहीं करना, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारी रिफॉर्मेशंस आ चुकी हैं विद इन द ग्रामर, तो अब आप कोई भी सेंटेंस प्रीपोजिशन के साथ एंड कर सकते हैं. उसका एग्जांपल ये है, द कार हैड नॉट बीन पेड फॉर एंड्स विद द प्रीपोजिशन बट इज एक्सेप्टेबल. अब इसमें अनक्लियर रिवीजन, अब यहाँ पे देखें पेड फॉर द कार नॉट हैड नॉट बीन, ये अनक्लियर है. सो for selecting the clarity we can use them. So it depends on the कौन सा context है, sentence बन रहा है नहीं बन रहा, but you're free, you're allowed to use that. I would like to know where she comes from. ठीक है, only grammatical revision है. I would like to know where from where she comes. अब यहाँ पे देखें grammatical but only formal है, इसकी जरूरत नहीं है but they have done it. इसके आगे, however in academic writing you may decide that is worth revising your sentence to avoid ending with a preposition in order to maintain a more formal scholarly voice. चलिए इसमें एक पॉइंट है कि आप अपनी एकेडमिक राइटिंग में कोशिश करें कि प्रीपोजिशन को थोड़ा सा अवॉइड करें, यहाँ पे रिविजन्स लगा के आप अपने एक्सप्रेशंस को मेंटेन करें. जैसे my research will focus on the community the students lived in. My research will focus on the community in which the students lived. Now this is best expression in best revised version. क्योंकि we have replaced the preposition यहाँ पे, so we have studied about the replacement of preposition or doing revision जब end हो. तो चलिए ये बात याद रखें कि academic writing अंदर you should not use it, you should avoid it क्योंकि it does not sound well. ये first वाला. Okay, then I like the people I'm working with. I like the people with whom I'm working. With whom आ गया object वाला केस है. Okay. इसके बाद है prepositional phrases and wordiness. चलिए जो phrases हैं उनको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि सारे आपके जो पहले ग्रामर के रूल्स क्लियर हो जाएं उसके बाद you will be able to understand कि noun phrase, prepositional phrase ये सारी चीजें क्या हैं. तो उनको अब इस वक्त हम टच नहीं कर रहे, but I will touch them after completing the parts of the speech, tenses और जो major grammar errors हैं वो once we are done with it उसके बाद हम इसको टच करेंगे. ठीक है.